a common question which I often hear from the aspirants is, sir, please tell us the important topics of CSAT, or what are the topics which we should be studying first. So I'll try to answer some of these questions through this video. So welcome guys to our channel UPSC by Anuj Jindal. My name is Chetan, and as you can see, the title of this session is Trend Analysis of CSAT. So what are the topics which have been repeatedly asked over the years? That is what I am going to discuss in this video. So before I start with the session, a brief about myself. I have done my bachelor's and master's in commerce from Delhi University. I have written various competitive examinations like CAT, SSC, CGL, Bank PO, etc. I worked as an assistant audit officer with CAG for 1.5 years, but then I came back to pursue my passion for teaching. So that's about me. Now, as I told you, so I have taken the data of the last 5 years because that is more relevant to us. So 19 onwards, so 2019, 20 till 23. And what I have done is I have bifurcated the paper into 3 sections, as I have also told you in one of my previous videos, that is maths, reasoning and English. So data interpretation is the part of maths, okay, and then your problem solving and decision making is a part of reasoning, to just clarify the things out. So you can see this green line represents English, the red line represents reasoning, and the blue line represents maths. So I have already given you a vague idea about the proportion or percentage of these 3 different areas in the examination. But in this video, we are more concerned about the trend or the pattern over the years. So as you can see, if I talk about English, the weightage of English has almost remained the same over the 5 years. So earlier they were asking around 30 questions. Prior to 2019, even more than 30 questions were being asked. But now it has, it is constant at around 27 questions out of 80 questions. So there are a total of 80 questions in CSAT paper. So English comprises of around 27 questions. Then if I talk about reasoning and quant, so you can see one pattern over here. If you see specifically, look at the quant section. So since 2021, you can see an increasing trend in quant or maths. Maths का proportion आप देख सकते हैं, it has been increasing, and that is the reason the level of the examination has been increased, because out of maths and reasoning, maths जो होता है वो ज़्यादा difficult होता है as compared to maths and reasoning. Maths is a little more challenging for many of us, and that is the reason, because the number of questions of maths have been increased, that is one of the reason that why the level of the exam has been increased. And contrary, the proportion of reasoning has a little decreased as compared to quant. Okay, so this is a broader picture of maths, reasoning and English, their sectional proportion over the last 5 years. But now we'll dig deeper into it, और मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूं कि स्पेसिफिकली मैथ्स का क्या ट्रेंड रहा है और रीजनिंग का क्या ट्रेंड रहा है topic wise. Okay, so this was just to give you a broader idea as to how the trend is moving. So the one key takeaway or one insight from this slide is that maths पे हमको अच्छा focus करना पड़ेगा. We have to give more emphasis to the maths section, and I'll also tell you the topics of maths and reasoning. So it's very important that we understand that which topics we should be giving more focus and which topics should be done first. Now, first of all, I will like to talk about the maths section. So again, I have taken the data from 2019 to 2023, as you can see, and these are the topics from which questions have been asked over the last 5 years. There are some topics from which questions were not being asked, but those are also important. For example, probability is one such topic. So probability and permutation combination we study together because they are very, very related. So probability is one important topic which is missing in this list, but that is to be done properly. And then there are some topics of arithmetic which are also missing, like simplification, partnership, from which questions were not being asked in the last 5 years. Now, as you can see in this table, I have arranged the topics according to their importance or according to the repetition. Like number system has been asked almost in every year, and maximum questions have been asked in number system. So number system is the most important topic, one can say, in the entire paper of CSAT. After that, you can see
permutation combination, as I told you, is the second most important topic in terms of weightage. So the importance of permutation and combination has been increased over the years. Now more and more questions are being asked from permutation combination. Probability is another topic, although questions have not been asked recently, but prior to 2019 a lot of questions were being asked from probability also. So that is also to be done. Then algebra is another very important topic. Now algebra is a branch of mathematics. So algebra comprises of your linear equations, quadratic equations, okay, polynomials. So a lot of things come under algebra. But in CSAT examination, they are generally asking you linear equations. They do not go into quadratic equations as such, but maximum they can go to quadratic. They will never ask you cubic equations or very high level questions. So basic one variable equations you have to form. So algebra, again, the weightage of algebra has been constant, and again it's a very important area and very scoring also. Okay, then you have geometry and mensuration. We club these two together. This is another important area, geometry and mensuration, which comprises of, now mensuration comprises of 2D figures and 3D figures. So you can see that these four, especially these first four, are very important, and you should be covering them first if you are starting your preparation. You can start with number system, then permutation, combination, probability, algebra, and geometry. You can study like in this sequence based on their importance. Okay, then you have set theory and Venn diagram. So in some years question have been asked, in some years question have not been asked, but again this is also an important area, set theory and Venn diagrams. Then you have data interpretation. So data interpretation, a lot of questions were used to be asked before 2019. 2019 से पहले काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, पर धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई है. अगर आप पहले के पेपर्स देखोगे 2011-12 जब सीसैट नया नया स्टार्ट हुआ था, तब काफी क्वेश्चंस डीआई से पूछे जाते थे. तो अगेन वी कैनॉट इग्नोर दिस एरिया, ऑल्दो इसकी इंपॉर्टेंस अब कम हो गई है. देन यू हैव दीज ऑल टॉपिक्स, time, speed, distance, time and work, ages, averages, profit loss, percentage, okay, ratio, proportion, mixture, allegations. These all topics, all the topics come under your arithmetic. ये सारे topics arithmetic से आते हैं, और arithmetic से आप देख सकते हो 5 से 6 क्वेश्चन हर साल पूछते हैं. ओके, इन सम ईयर दे विल आस्क फ्रॉम, तो देखो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क आर मोर इंपॉर्टेंट अमंगस्ट ऑल. टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क ऐसे टॉपिक्स है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एज कंपेयर टू अदर्स. दे आर मोर कांस्टेंट. क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दीस टू मोर कांस्टेंटली. बाकी भी जो टॉपिक्स हैं आपका एजेस, लाइक एजेस इज अनदर टॉपिक फ्रॉम विच क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑलमोस्ट इन एवरी ईयर कंसिस्टेंटली. इसके अलावा आपके अदर टॉपिक्स हैं लाइक प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इंटरेस्ट, पार्टनरशिप. सो दोज आर सम अदर टॉपिक्स ऑफ अरिथमेटिक. सो ब्रॉडली दिस इज द एंटायर सिलेबस ऑफ योर मैथ्स और क्वांट सेक्शन. और अगर मैं 2023 की बात करूं या फिर रिसेंटली 22-23 की बात करूं, तो अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैथ्स में, उसमें काफी क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट बेस्ड वो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मींस, so for example they will ask you a question of time and work, but they will give you 2 statements and then they will ask you which of the statement is correct, or they can frame a question of data sufficiency. वो क्या कर सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन देंगे, 2 स्टेटमेंट्स देंगे, and then they will ask you which of these statements is sufficient to answer the question. तो आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा लेंदी बना रहे हैं. what the examiner is doing is he's making the questions a little more lengthy. उससे क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा हमारा इन्वेस्ट होता है. तो मैथ्स थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इन टर्म्स ऑफ दैट. तो दिस द ब्रॉडर आइडिया is to tell you that these topics are more important, the above topics are more important in terms of weightage. तो आपको इनको थोड़ी सी और प्रैक्टिस आप इनकी कर सकते हो, बट यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स. और जो टॉपिक्स यहाँ पे नहीं भी हैं वो भी आपको कवर करने हैं, बिकॉज यू हैव सफिशिएंट टाइम. अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, हमारा मई एंड में एग्जाम है इन 2024, तो हमारे पास टाइम बहुत है. तो अभी हमारा फोकस है कि हमें सिलेबस तो पूरा ही कवर करना है, बट हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स पहले कवर करें. दैट इज द की टेक अवे विच यू कैन टेक फ्रॉम टुडेज वीडियो. देन द नेक्स्ट सेक्शन विच आई वांट टू डिस्कस इन डिटेल इज द रीजनिंग पार्ट. अब रीजनिंग की बात करते हैं. सो अगेन आई हैव टेकन दिस 5 years डेटा. तो यहाँ पे भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइक क्लॉक्स एंड कैलेंडर, सीरीज, नंबर सीरीज, प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन का मतलब हो गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके एपी से ही पूछते हैं,
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं. देन यू हैव डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग. तो ये जो आपके 7-8 टॉपिक्स हैं, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इन सभी टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंसिस्टेंटली. ओके, so these are the more important topics, but again we cannot ignore the other topics. बाकी टॉपिक्स भी हमको कवर करने हैं, हम उनको बाद में कवर कर सकते हैं. so our priority could be कि हम ऊपर वाले टॉपिक्स को पहले कवर करें. right now there are other topics also like puzzles, सीटिंग अरेंजमेंट. अब सीटिंग अरेंजमेंट में आपका लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द एग्जामिनेशन. देन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. So this question was recently asked in the 2023 examination. थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था, तो ये आपका एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट हो जाता है. एनालिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग में भी हम इसको काउंट कर लेते हैं. देन इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, एंड दैट इनइक्वालिटी क्वेश्चन वाज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. क्या था, एक स्टेटमेंट गिवन थी, 2 कंक्लूजन गिवन थे, आपको बताना था विच ऑफ द 2 कंक्लूजन फॉलोज. तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कैसे हो रहा है, बिकॉज नाउ दे आर आस्किंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि ईदर यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और यू हैव टू टेल व्हाट इज द राइट कंक्लूजन, या फिर आपको डेटा सफिशिएंसी टाइप क्वेश्चंस पूछ लेते हैं दैट व्हिच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू गिव यू द आंसर. तो इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 लाइनर और 2 लाइनर क्वेश्चंस अब कम पूछ रहे हैं. राइट, देन यू हैव अदर टॉपिक्स लाइक अल्फाबेट टेस्ट, क्यूब्स एंड डाइस, नॉन वर्बल रीजनिंग. तो इनसे एक दो क्वेश्चन किसी साल पूछे गए हैं, बट नॉट वेरी रेगुलरली. बट अगेन वी हैव टू कवर वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली बिकॉज सीसेट इज सरप्राइजिंग अस एवरी ईयर. But as I told you, before we start preparation of any exam, it's important that we understand the pattern of the exam, the syllabus in detail, okay, the trend. ये सारी चीजें भी हमारे लिए जानना जरूरी होती हैं. सिलेबस कवर करना is the utmost priority, is the top priority. But again, थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड का आइडिया होता है about the exam, then it's become easy because हमारा थोड़ा fear कम होता है, हमारी अनसर्टेनिटी कम होती है, और हमको पता होता है कि हाँ we know about the exam. So that is why that was the objective of making this video. So I hope guys आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. If you have liked the video, please do hit the like button, and also you should share this video with other aspirants also, because this exam, CSET exam cannot be taken lightly. अब जैसा ट्रेंड है हमें इस पे भी अटेंशन देना पड़ेगा. रेगुलर इसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे आप दिन का आधा घंटा ही क्यों ना निकालो, बट रेगुलर हमें इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा. बाकी इन द coming weeks I'll be making some more videos about the book list, about the strategy, because ये सारी videos काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं आप सभी के लिए. बाकी I also want you to comment below the video. आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, या आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, then I'll be more than happy to make a video on the topic of your choice. So on that note guys, I will take your leave. If you have any query regarding the exam, you can always call on our number, counselor number, that is 9999, that is 9999 466 225. You can always call on this number for any query. Also you can visit our website anujjindal.in to get information about the courses we offer. Apart from that, you can join our Telegram group. The link of the group is in the description below. And this is our application, a very, very beautiful application for all the aspirants. A lot of free study material you will get on this application. So on this note, guys, I'll take your leave now. I wish you all the very best. And I'm always there for any kind of assistance. Goodbye, take care, and Jai Hind.